is connected. Only when TME is complete and he chose to not to do this, so it is he has powerfully chosen, and we respect that because serving Father is important. Is important. So we respect that. Anybody else? RKP Verma was never in plan. He chose to come on that day because that person shown the eagerness to come. So he had not planned. Who else? Manish communicated beforehand, therefore he is not here. He said that Naveen, I am busy, but if you really need me, then I will have to change the schedule. Somewhere I find that his communication was inside of feeling important. But whether I am important, so I was not enrolled by the conversation because that, though I have told him that you have chosen a very good topic of money and abundance. You are sharing me in the first semester that I am seeing something, that money and abundance area I can create something. I said, get immediately in touch. As soon as you get that I have something to share and I can create time for that, we have all the doors open for you. That's what I said. Who else? No, Ramji sir was only for his. He has chosen to attend 7, 8, 9. And that is his greatness, humbleness. Because he didn't have any agreement to attend that. But he is so much committed for improving himself that he could see, even though my invitation was not as clear that it will help him or benefit him, but he got it. I respect him for that. And he chosen to attend 7, 8, 9 for bringing more clarity in his delivery. And yesterday also, whatever conversation I had with him, I can see that he could see the limitation of his training. And as far as my assessment goes, he can create miracle if he can take the input what he has got here in his training potential. He's very powerful and very good deliverer or presenter. So he has, in fact, while going, he said whether there is more rooms available. अगल बगल में और रूम है क्या? I want to come and be more time here. So, and more people will come. So that was the context that this organization will be growing and you may require more space. That's a good sign. Okay. So I think we have addressed everybody, whoever was supposed to be here. Now, we intended that we will have money and abundance. And we also, and we also intended that anybody who will come in our touch will have money and abundance. Not only we have money and abundance, but whoever comes in our contact, that is, ability to transform others, gets money and abundance. Now, one of the most important thing for that, how I will share most of the time whenever I will get opportunity to share how I created breakthrough and how I created money and abundance in the area. Just to declare before, and if I have not told you, I will share how I became the richest trainer on the earth.
We will discuss that. But that is later on. First is that what is the most important thing for being and the holding money and abundance. There are leakages. What is this? It is also merger and acquisition. Every guy will say merger and acquisition. Okay. These are the leakages. I remember, when I went to Pune. In Bombay, I was again with the mission of India development, and I was including everyone. Let everyone get included. Inside of the inclusion, I didn't count. Like yesterday you and day before yesterday you have learned income and expenses. If this is higher than this, you are hollow, you are empty, no money, no abundance. So how are you taking care of this, these holes? I was not aware of this. So I found that the leakage is more than the income coming. So I fled from Bombay because I didn't know I had to stop this. I didn't know that whenever I have taken the big game of transforming everyone or transforming country, that invariably it comes with some expenses or leakages. And leakages are mostly coming in the form of people. Most important leakages are people. Like in the sense of brain drain we say, यदि brain चला गया आपका foreign, तो हम लोग बोलते थे brain drain हो गया. उसी को दूसरे रूप से जब देखने लगते हैं, तो वही अपना power बन जाता है. Earlier population was considered as curse. Now यही population यदि transform हो जाए, तो this becomes your asset. जो liability है population, that can be converted into, that's what you learned yesterday. Similarly, when we are talking about transformation of planet, we are talking about transformation of people. If people are transformed, the planet is transformed. So the leakages, where is expenses? Where is leakage? If you don't transform them, it remains leakage. If you transform them, it can convert into. So it's a very important thing that you don't allow your people to be leakage. If you don't fill up this, never think about money and abundance. You are not serious about money and abundance. I didn't have the power to transform leakage into. I fled from Bombay. जाता हूँ रंगा साहब के सराउंड में. उधर में शायद थोड़ा बहुत बचेगा. उधर गया तो उधर भी लीकेज. ऐसा नहीं लीकेज का तो कहीं कमी नहीं है. Not in Ranga per se, but the people surrounded and the situation surrounded. Because unless or until you transform the people,
Before that, you know how to close the leakage. Nothing is going to happen. तो मैं सोचा कि रंगा साहब मेरे को बचा लेगा. I wanted to be comfortable. I wanted to be comfortable. But कोई नहीं बचा सकता आपको. If you don't have your ability to close this leakage yourself, nobody else can save you. I realized it 4 months, 5 months down the line. Oh shit! I have to do it, boss. So I shifted back to Bombay. But still, shifting is not the case. It's transforming. What to do? Then after struggling for some more time, I fled to Delhi. मोहन जी के शहर में. मोहन बाबू, दिल्ली में नहीं करता हो यार कुछ. मोहन बाबू ने बोला, करिए, whatever you want to do. I realized, boss, 2 days, 4 days, 5 days, 10 days, whatever I was there, I realized, boss, still the main thing is not happening. Main thing was being with family. Family तो मेरा पटना में. ठीक है, यहाँ स्ट्रगल किया तो बम्बई ही ठीक था. तो इधर फिर करके क्या मतलब? तो फिर बम्बई ठीक है. बम्बई से क्यों भागा? फैमिली के लिए भागा. फैमिली के नजदीक रहूंगा. वो तो फैमिली के नजदीक ही रहना, तो फैमिली के साथ ही रहना. I shifted to Patna. I was there for 1 month or so. I was sleeping on the corner of the bed. A small bed, a small room, a small bed. We 4 has to be adjusted. Because it was a small house of my father-in-law. 2 small BHK, or you will say room kitchen. In that one room is for Jayanti and children. I got into it. So we 4 were there. Somehow I had to manage. After 1 month of, I realized, bloody, even family is not yours, यार. परिवार भी आपका नहीं है. किसके लिए कर रहे हो? जो मोह से गया था, बीवी बच्चे के पास रहूंगा यार, थोड़ी लोड लेता हूँ, खाना तो खाता हूँ, 10 रुपये का मेरा थोड़ा इंटरनेट चेक कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत अपना मेहनत कर रहा हूँ. I will create something in few months. But bloody even days become difficult. And in Sanskrit or in Hindi, in our Ved or Quran, wherever, I have read one line, very important. स्त्री विहीन पुरुष की पूजा. Nobody cares for those person who doesn't have nobody cares. Why didn't? बच्चे भी नहीं. कोई नहीं पूछता. Nobody. मेरा मुंह भंग होगा. लास्ट रिसोर्ट जो मेरा था, यार बच्चे फैमिली के लिए कर रहा हूं. जो लास्ट रिसोर्ट अंगुलीमाल के लिए था, अंगुलीमाल को गौतम बुद्ध ने कहा, अरे इतना ज्यादा तू मर्डर कर रहा है. Yesterday my son has a habit of listening a story. Every day he listens a story. I have exhausted all the story over a period of so many years. So I have to think now. तो कल मैं सुना रहा था अंगुलीमाल का कहानी, and see the confidence. It's perfectly matching. कि अंगुलीमाल से पूछा कि भाई इतना जो पाप कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? परिवार के लिए.
तो उसमें भागी बनेगा वो लोग? क्यों नहीं? वाई नॉट? जा जरा पूछ के आएगा, कंफर्म कर आया कहा ही जा। बोला बाबू मेरे को बुद्धू समझते है क्या? मैं इधर कंफर्म कर दे गया, तू इधर उड़ाएगा। सबसे बड़ा बुद्धू मेरे को ही समझा। बुद्ध ने बोला मैं भागूंगा नहीं, तेरे को विश्वास नहीं होता है तो बांध दे मेरे को। अच्छा ये ठीक आइडिया है, बांधा टाइट से बुद्ध को, पूरा टाइट बांध करके फिर तेजी के साथ ये कि पहले जल्दी से आऊंगा, अपना उंगली 108वां वाला लगा लूंगा। क्या उंगली इस बात में बोला? माला जो पहनता था तो बोलते थे कि जो उसमें एक ही बचा हुआ फाइनल 99 का चक्कर है, 100वां हो जाएगा। मर्डर करके उंगली पहन लेता था। उंगली पहन लेता था तो उंगली माल कर लेता। उंगली काट के बांध लेता। अचीवमेंट मेडल स्वाट मर्डर किया। 8वां वो था। बोला आई डोंट नो 108 था कि 100 था। क्यों ये कुछ हुआ? हाँ 99 हुआ था, 100 बाकी। बोला ठीक है, तेजी से गया। बुद्धा वेट कर रहे हैं। थोड़ा देर बाद देखकर एक आदमी बड़ा धीरे लड़खड़ा गया था, तेजी से दौड़ते हुए उठते हुए आ रहा था बहुत भारी कदमों से। जब तक बुद्धा के पास पहुंचा तब तक लेट गया, बचा नहीं। क्या हुआ जी? कड़ा दो और पहले खोलो यार। ठीक है खोला उनको। क्या हुआ? कोई नहीं मानने को रेडी, माँ बाप भी नहीं। तो तू किया, तू बोल, तेरा ड्यूटी है, तू करता है, खिलाता पिलाता है हम लोगों को। इसलिए पाप का भागीदार का कब एग्रीमेंट बना था हम लोग का? आजकल एग्रीमेंट का बात कर रहे हैं सब। किधर एग्रीमेंट है? किधर मैंने बोला था कि जो मैं तेरा पाप का भागी बनूंगा? कोई नहीं बन रहा है। बस अभी क्लियर है ना? क्लियर है। अभी से क्या करना है? खत्म हो गया। अभी से मेरे को अपने शहरों में मेरे को अपना शिष्य बना। एंड देन अंगुलीमाल became saint. सिंगल कन्वर्सेशन देख सुन दिला दिया, एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया बुद्ध का। अभी क्या है, कलयुग आ गया बेटा। सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन से सवाल काम ही नहीं चलता है। मेरी एरिया में Many areas. So I have learned many things in my life in the area of money and abundance. One of this is this कि आप लीकेज को बंद करो। But how do you connect that story to your life? कोई भी अपना नहीं। We were discussing. Thanks for asking. Like कि कोई नहीं अपना है यार। मोह माया जो है ये उनका चलाया हुआ गेम है। उस गेम में आपको फंसाने के तरीके हैं। जब वो मोह भंग हुआ, मैंने सोचा था कि मां पिता से कभी पैसा नहीं मांगूंगा, लेकिन यार अंत में माँ बाप ही काम आते हैं। मैंने माँ को फोन किया, 2000 रुपये भिजवा, तो टिकट के लिए चाहिए ना। बीवी ने तेरे से मना कर दिया। I was leakage for her. She is not wrong. She has to close her leakage. मेरा लीकेजेस कोई और था और मैं उनका लीकेज बन रहा था। तो कौन था जो लेके? Many people I got associated. Nothing wrong with that people. It was with me that I was associated with such people without transforming them into income. They were expenses. So it was not one person, I will say many of them. And I was the cause. ₹2000 आए,
टिकट कटाया, ट्रेन पे चढ़ने लगे, ससुर जी ने भी 10,000 रुपए दिए और अच्छी अच्छी बातें भी बताई। मेहनत नहीं होता है, मेहनत कीजिए फिर आ जाएगा, कोई बात नहीं। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी पेनी दैट आई गॉट इन माई लाइफ had made a huge difference, has put me at the next level. Even sometimes 100 rupees, sometimes 50 rupees. Every penny has worth. And I respect everybody, thank everybody from the bottom of my heart for whoever has supported me. So 2,000 out of that some ticket, 10,000, and then I again moved. Because then on that day I decided, बॉस अभी कोई उपाय नहीं है ये लीकेज को बर्दाश्त करके, वो जो सॉफ्टनेस है, इट इज किलिंग मेनी ऑफ द पीपल. सॉफ्टनेस टुवर्ड्स द पीपल फॉर बीइंग लीक और लीकेज. Convert the word softness in a way that I can understand. सॉफ्टनेस मीन्स टॉलरेटिंग. सॉफ्टनेस मीन्स ठीक है यार, टॉलरेट करो करो, एक दिन सुधर जाएगा. Being nice, you are talking. हाँ? You are being nice. Being nice. You can't compromise there because it has impact. Look at all the people whom you think can be either leakage or potentially. Take 2-3 minutes time, write down, because after that I did the first thing, got myself dissociated with all the people who were leak point. You mean relationship or something? No, means not spending time there. See, time is your, what is your asset? Time. Time is your money. Because we are intellectual people, right? We don't have inherited 1 crore rupees. I came with how much? 10,000 and 200. The money is not with me. But time was always 24 hours. जो बिल गेट्स के भी था और मेरे पास भी था. वो टाइम में किस पे स्पेंड करता था? Now I have started deciding. So I have dissociated myself from such people who are the leakage point. Because if you are associating with them, somebody else is paying your bill. वो लीकेज कोई दूसरा आदमी दे रहा है और वो आदमी अपसेट होगा. मेरा पैसा को लीक कर रहा है. We may not be aware. जिस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी से यदि पैसा आ रहा है और उस पैसे को हम सही ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं और उस लीकेज पीपल के थ्रू डाइवर्ट कर दे रहे हैं, और चूंकि मेरा काम चल जा रहा है तो हम उसी हिसाब से चलना चाह रहे हैं. मेरा तो काम चल रहा है यार, मेरा चल रहा है, लेकिन वो कंपनी वाले के बारे में सोचो यार. वो कंपनी बंद हो जाती है. क्यों इतने सारे 90% ठप हो जाते हैं? क्योंकि एम्प्लॉय में वो समझ नहीं है कि वो जो आ रहा है वो कंपनी के लिए अब मैं लीकेज हो गया. कंपनी ठप हो जाती है, कंट्री ठप हो जाता है यदि ज्यादा तो लोग लीकेज वाले हो जाए तो. Why country is not bubbling with energy? More and more people become parasite. Write down. Write down the name of people. You may not share this, okay? Because you may not feel comfortable sharing the name. But write down for your purpose that these people are or potential leakage. Go ahead. One. And at that time you can't play around with the intuition and message.
Your ego is no longer there. My mama ji said, oh, ये सुनील हरिवल है ना, उसके साथ वो ट्रेनिंग सेंटर है उसके साथ तो कुछ ना डील जरूर कर लेना. I took it with utmost sincerity because they are our elders, are our well-wisher. Invariably. And always remain alert that when it becomes leakage, because nobody is there at the point, because he may be leaked by somebody. Leakage is taking somebody and that comes to you. Be alert for that. So that is there, but take it with most sincerity. When I met with him, he said, अच्छा ये ट्रेनिंग सेंटर आप रेंट पे लेना चाहते हैं? Yes. लेकिन मैं 7,500 दूंगा. कब देंगे? 3 महीने के बाद. 3 महीने तक मेरे को ट्रेनिंग देने दीजिए. 3 महीने के बाद मैंने I played like 3 महीने का और ऑक्सीजन. 3 महीनों में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा. ट्रेनिंग में दम है, रिजल्ट आएगा. 7,500 21,000. तीसरे महीने तक खत्म होते 21,500 उसके हाथ में. And then rest is history. It just started, training started. Yesterday that gentleman came, the transformation. वो लड़का जो ट्रेनिंग में आता था, he used to be very rough. Yesterday there was one coat and pant during lunch hour. Sadanand Rahate. Very rough. क्या फालतू बकवास करते हैं साहब? Okay. Yesterday when he touched the feet, transformation हो गया. 2 साल के बाद 3 साल का. क्या हुआ? नहीं सर, अब समझ में आया आप क्या बोलते हैं. मैं क्या बोलता हूँ? So the result was there. So you were one of the pros. So first thing is cleaning up the leakage. Please write down. Close the leakage. Write down the people who are your leakage point in terms of time or money or committed action. Some people talk loose and you get into loose talk with them because of your looking good, because of not being who you are, because of यार वो क्या सोचेगा, ये बहुत हाई-फाई हो गया है, बहुत सीरियस हो गया है, to show that I am also like him. We get engaged in many things. Right. Kiran was always knocking me. Who? Kiran. This is your leakage. Why? This is your leakage. Still, अभी रेड साल में फिर leakage attached promise से. Correct. She told many times again. Yeah. This is your leakage. Right. अपने माध्यम से employment हुआ. उसको बोले साइड go ahead. Okay. Yes. Enjoy your job. Don't Yes. मतलब Yeah. इधर नहीं रहने का. Yes. बट बेटे वो जो माइकल का होता है ना यार एक दो बार जल्दी होना चाहिए सपोर्ट ऑल आर लीकेज. Yes. जैसे ही एबंडेंस मनी आया सर Leakage एकदम point. मार You are लीकेज surrounded by leakage points. अरे वाह यू अटैक. मेरा गुलाब के फूल को क्या यस इंसान भी नहीं छोड़ता. सो आई गॉट थैंक्स टू मिस्टर नली. Thanks to you, you have worked on that. You have applied your mind. You have worked on that. लेकिन यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि उनके साथ डिटैचमेंट होना. Like, give me some example which you are talking about. Normally what I
लोगों को हम लोग पेमेंट्स के लिए फॉलो अप करते और मेरे को मालूम है कि वो मेरे को यहाँ से मांगो यहाँ से मांगो। Take one example. Take one example. So that we get into takes less time. नॉर्मली मेरे बिजनेस में मुझे प्रीमियम कलेक्शन करना है, और वो प्रीमियम के लिए मैं उनसे रिमाइंड करता हूँ और फॉलो अप करता हूँ 6 मंथ 8 मंथ, तो 10 मंथ्स के बाद बोलेंगे नहीं लिखी, तब तक तो मेरा टाइम भी उतना वेस्ट होता है, प्लस वहाँ पे फॉलो अप LIC के साथ बढ़ जाता है कि इसका रिक्वायरमेंट है ये वो। तो उनके साथ ना कनेक्ट होने से वो और नुकसान है। No. उनका पॉलिसी इंश्योरेंस वो अलग बात, that is different. वो आपका कमिटमेंट है, फॉलो अप है, वो लीकेज नहीं है। कमिटमेंट है, फॉलो अप है, वो आप पहले डेलीगेट कर दीजिए अपने टीम के साथ, वो अलग चीज है। Yes, thanks for sharing. Yes, राहुल बाबा, ये तो एकदम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो भैया। I'm spending time in train so long, almost 4 hours per day. So that is my biggest legacy. Can you see that? Start thinking faster, right? ओम प्रकाश को दिया काम पढ़ने के लिए। Take in your charge. Other people will not understand your secrets. नहीं? खुद अपने हाथ में लेके लीकेज पॉइंट को बंद करना किसके हाथ में है? मैं बोलूँगा ये मेरा लीकेज थोड़ा सा ठीक कर। प्लम्बर को बोला क्या? यस सर, जो कंपनी का मतलब मिस यूज मतलब जो करता है उसको बोलते लीकेज हो रहा है, जो कंपनी का फालतू मतलब फायदा उठा रहा है। एक्चुअली जैसे कि तू उस दिन 1 घंटा मेरे से बात कर रहा था। हाँ सर, लीकेज पॉइंट तो आपने मुझे समझाया समझाया ना, डांटा। जब मैं 1 घंटा बाद रियलाइज किया अरे मैं अर्जेंट काम कर रहा था, आई वाज प्रिपेयरिंग समथिंग वेरी अर्जेंट, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, ये अपना रामायण महाभारत लेके बैठा हुआ है। चुप साइड ऑफ, आई कुड अलर्टनेस इज रिक्वायर्ड। कब 1 घंटा निकल गया और जब मैं देखा काम है, ओह माय गॉड गाड़ी इतना स्वीट लीकेज हो रहा है, यू हैव टू बी अलर्ट। I would just share. 4 महीने पहले मैंने इन्हें जिसको 6 महीने से मैं ट्रेन कर रहा हूँ, तो कहीं कुछ हुआ है कि भाई ही इज गोइंग आउट ऑफ फेथ, मैंने एब्सोल्युटली कट कर, नो कॉल्स, नो नथिंग, एब्सोल्युटली कट ऑफ। और अभी ये लीकेज की बात होती है तो नाउ इट इज गेटिंग रिकनेक्टेड एंड आई जस्ट वांट टू कॉल दैट आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू सी यू, आई एम इन फॉर। People are going, something happens, connecting back. When they are being pampered, they become a leakage. When they are cut off, they realize, they come back. And this is happening all the time in life. The first thing happens is कुछ नहीं होता तो आप छोड़ो, काट दो, खाते जाए, काट दिया। 4 महीना एग्जैक्टली 4 months। अब भी फोन आया, अर्जेंट है, समथिंग इज बैड हैपेंड टू यू एंड रिकनेक्ट। नाउ देयर इज अ चांस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ। गुड। मेरा बिजनेस इज ह्यूमन बीइंग, सो आई हैव नो अदर पर्सन, नो अदर trade which I can talk about. It's just like we connected with the God. Whenever we are in difficulty, we go to temple and come back and again go to temple. But if temple allow or God starts allowing leakages, He doesn't allow that. He is silent. He doesn't allow prestige. Because He knows that if the committed people come, I have to give them. I can't allow, वरना उसके पास सब लोग लेके पहुंच जाते हैं। दे दे बाबा, चेक कर दे बेटा, जिसका कर्मा है वो ले जाए, जिसका नहीं कर्मा, वरना तो लीकेज हो गया ना, तो जो डिजर्विंग है उसको कहां से मिलेगा? कर्म है तुम्हारा, ले जाओ, तुम्हारा दम है, तुम ले जाओ।
मैं तो यही हूं, कर्म नहीं है, बाबा जी का टुल्लू, साईं बाबा का टुल्लू. Ranga Sahib has referred somebody to me. I could see there was a leakage. One or two interaction, I went very fast. Immediately, what I do is, if there is somebody who is getting connected, I check it up very fast. I went out of the way, saw everything done, leakage. Give them some opening, some support, and ask them to work on that. And I think they are working on that. But never compromise with that. If you are tolerating that, to the extent you are tolerating, to the extent I have tolerated 1 hour of his sit, I have done injustice with many people who are in commitment with me. You know, as a, like my child, my wife, they are fully in commitment with me at this point of time. Why she cut me, my wife cut me? Because I was tolerating shit from many people, and I was not only tolerating shit, I was transferring that. So she has to cut off. I got the message. And I have to be alert to even my wife that if she is loaded by something, her conversation, because it can happen any time, that it becomes vice versa. She becomes leakage, I have to be alert to even that and to support her. It is never like permanent somebody is full and permanent somewhere the leakage is happening. It's ordering. वो गाना है ना, माटी से है कुम्हार से, तू क्यों रो दे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोड़. It keeps on changing. It's never permanent. Change is only constant. So you have to be alert to anything, anywhere. Then your income and expenses, that your income starts flowing in. It starts increasing. Mostly, if your self-worth is less, mostly, if your self-worth is, आपका वैल्यू अपने आप में कम है, तो आप लीकेज ज्यादा अलाउ करते हो. How do you distinguish? तब आप ऐसा सोचने लगते हो, आपका डिस्क्रिशन, आपका कॉमन सेंस, आपका विवेक, उस चीज में सोचने लगते हो कि आप जजमेंट नहीं कर पाते हो कि कौन लीक है और कौन बेनिफिट है. So for example, let me share with you. I was in Pune at that time, and there was one advertisement in newspaper. Get this money, finances. Called up, साहब 40,000 रुपये एडवांस लगेगा तो आपको मिलेगा. I went with 40,000 दिया पूरी तरह. 40,000 दिया, उसने 10 लाख का चेक दिया. चेक डाला बाउंस, चेक डाला बाउंस, उसके तरफ मिलता भी था. ये सारे थोड़ा दिन में वो मर गया बेचारा. That's a different issue. But the point is that the self-worth was less clear. So I didn't have the discretion to measure कि कौन आदमी सच्चा है और कौन आदमी फेक है. जब सेल्फ वर्थ रहता है, when you know who you are, what do you ask? Don't be a leak, boss. You are allowing yourself to be leaked, and you are puncturing here. Take care.
कैसे ये बाबू कौन है? जिसमें कंफर्टेबल हो, जो सीक्रेट रखने वाला हो रख सकते हैं, जो शेयर करना चाहते हैं कर लीजिए, बट बी क्लियर अबाउट इट. I have spent a lot of time behind my customers or caring, but he doesn't care. That is in terms of money. That is in terms of time, and also committed. Also, we are commitmentful. We are fulfilling his need, but they never fulfill my need. There is a big leakage. First thing. Second thing, my colleagues. For example, कि मैंने अपने colleagues को बहुत ही इतना समझाया कि ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये चीज होगा तो ये चीज होगा. But they are not transparent. They are not taking changes himself. Therefore, I am not going at my target, my achievement. Because if I want to become a general manager, there should be a perfect medical, perfect area manager, perfect regional manager, perfect general manager. Then I will become my target, my achievement. If you compromise with the leakage, see, you give the benefit of doubt. Be generous in giving the benefit of doubt. But if your benefit of doubt, your generosity, when it is considered as weakness, वही मैं बोल रहा हूँ कि अपने को मेरा जनरसिटी यहाँ नहीं दिखाना है कि जो करता है यार क्षमा करते जाओ करते कर. अगर ये क्षमा ऐसा करता रहेगा तो I have go to resign. actually you have lost on everything. And also I am not making goodness, yeah, making good his career. I am also trying to fail to him. मैं उनके करियर को भी बिगाड़ा, अगर उनको मैं क्षमा कर दे रहा हूँ, माफ कर दे रहा हूँ, करते रहो जो जैसा Actually, चलते रहना actually, तो उनका भी करियर खराब रहा हुआ, मेरा तो हो ही रहा. actually, ये जो लीकेज है, and people will want you to be like that. इंसान चाहेगा कि आप वैसा ही रहें कि लीकेज बर्दाश्त कर दे, तब ना वो आपसे समय खा रहा है, खून खा रहा है. They want you to be like that. They don't want you to be transformed. And remember, that person can be as close as your father, mother, sister, brother, trainer, guru, anybody. Be alert. There are many gurus who are weak. Bapuji. When somebody becomes weak, you never know. My mother has summarized very well. Asaram Bapuji. He said, Babulu, कभी तो उनमें ज्योति था. हाँ माँ, एकदम ठीक बोली तो. एक लाइन में, see the wisdom of the person. एक लाइन में उन्होंने पूरा महाभारत बता दिया. कभी तो उनमें ज्योति था बबलू. यस यस. लेकिन उसको मिस यूटिलाइज कब आदमी करने लगे, यू नेवर नो. कब वो लीक बन जाए, यू नेवर नो. बी अलर्ट. हम लोग क्या है कि अलर्टनेस आते आते बहुत देर कर देते हैं. जब तक मीडिया में नहीं आएगा, न्यूज़पेपर में नहीं आएगा. Why we say मैं को हटा हटा, क्योंकि कब बेटा मैं मेरे को कब लोग पैर पकड़ पकड़ के मेरे को कब लीक बना दे. हेलो, when I become leak for others, I have to be careful. कब मेरा ईगो
को चढ़ा के कब आदमी मुझे लीक बना दे। आप तो 3 साल पहले उसकी को मैं उनके बारे में बोल रहा था, मुझसे नींद आने लगा। वही बात बोल रहा था, उनको नींद आने लगा, रात ही हो गया था। ठीक है। Okay, so you are clear? Will you do something about those leaks? Will you be straight with those people? Sometimes it is possible that person, like I was that kind of person, who is being leaked is not present. It's your job to tell him, hey, be aware of the leaks. Hey, these are your weak point. You know, like जो आप आज सीख रहे हो, ये weak point है, आपका काम है वो, क्योंकि हो सकता है वो आदमी अनजाने में कर रहा हो. He is not aware of this, that somebody is whole, you know, pinching hole and like जैसे सामने अभी शेयर किया कि परफिंग तो वो तो इफेक्ट तो बीवी बच्चे पे आता है ना. We want anybody associated with TSB doesn't have those leaks. Be careful of that. Be extra alert. The moment you think you don't have leak, that you have achieved, be very clear. These leakages are so omnipresent that when it will do damage, and invariably you will do damage to the institute. Rahul. Yeah? Yes, Nat? Tell me, what is your leakage? बहुत सारे एजेंट आते हैं, बहुत सारे एजेंट आते हैं और मेरे को बोलते हैं सर ये वो, और मैं वो एक बीइंग नाइस करके उनको सारा चीज बताता हूं, और पता चलता है 1 घंटे के बाद मैंने अपना एक इम्पोर्टेंट वर्क जो था उसको मिस करके इसको मेनली टाइम. Actually, that is your asset. उस टाइम में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो हजारों लोगों को, उस टाइम में आप सैकड़ों लोगों को पर्पस पर डाल सकते हो, और वो टाइम somebody is licking and you are being nice. What are you doing with those committed souls? You are doing unpardonable work. Being nice. So just I will take one. ऑफिस में being nice, सर आप ग्रेट हैं, थोड़ा सिखा दो, थोड़ा MDRT बना दो, गुरु जी मेरा बन जा, फिर उनको बोलते हैं कि यू एनरोल इन दिस, आप इतने बड़े आदमी हो, आप पहुंचे हुए हो, फिर वो गायब हो जाते हैं कि आप देखिएगा सब लोग गायब हो गए, अभी जब आपके पास आने लगा सब लोग जुड़ गए. How to check who is your leakage? I'm giving some idea. Whoever is inspired by your purpose of life, whoever is enrolled into your possibility, the possibility is that they can be the asset. And whoever is, वो सब तो ठीक है, वो सब ठीक है, पैसा का क्या है? वो सब तो ठीक है, मेरे को उसमें क्या मिलेगा? पैसा का क्या? चांसेस ज्यादा है मेरा लीकेज.
एयर लीकेज। बहुत पैसे हो गए। मेरे को क्या, मेरा फायदा क्या? यू विल अंडरस्टैंड। नहीं नहीं ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है, लेकिन उसमें तो वो, उसमें तो वो, उसमें तो वो, उसमें वो, समझ जा भैया। अभी जब उसका टाइम आया है तो उसका क्या, उसका क्या, उसका क्या। जब तक आप उसे डिमांड नहीं कर रहे थे तब तक मैं सब ठीक है। एंड नॉट डिमांड एज अ मनी, बट डिमांड एज द पर्पस, यू नो, सपोर्ट फॉर द पर्पस। यू कैन चेक इट। टू एजेंट्स तो मुझे काफ़ी बोलते थे कि जब भी आपका नेक्स्ट सेमिनार या सेशंस रहेगा आप मुझे बुलाओ, और उससे पहले वो शायद मेरे पास 1-1 घंटा बैठते थे और मैंने उनको बता दिया ये लेते और ये अपनी ब्रांच में दोनों भी गए। Had a very real test. एटलीस्ट वहाँ पर हमने उनको इनवाइट किया था कि ये चीज़ आपके लिए हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यू कम एंड अटेंड। Actually, you know, when our team is not performing, I clearly see they are not present, that they are surrounded by leakage. I am clear. I forgive them because they are not aware. I give them the benefit of doubt. But you know, this 3 days is your breakthrough in finance and money. And most of us are sitting on major breakdowns. So if you don't catch yourself, if you don't really see that there is real fire, you will never get transformed. And I am still not getting that you are present, that you are sitting under tremendous breakdown. So like if you are 40 years or 42 years, 45 years or 40 years, 35 years, what is the age? 45 years, so 57 years. And you have not asset mass. If you have not created assets, let us talk finance, boss. Hardcore finance. You have leaked it. At least now get present. I won't allow the leak to happen. You know, the balance sheet and these things will not understand. Naveen Chaudhary has trained 10,000 people and caused a breakthrough in 10,000 people. Hardcore finance, balance sheet कल पढ़ा ना? Balance sheet किधर है asset? दिखा. क्या है liability? दिखा. Hardcore. And I started working on that few years back. बस ठीक है यार, बहुत अच्छा planning transformation सब ठीक है. माल किधर? किधर सीधी बात है। I was started working. End of the year लाइन लाकर बिठाओ, खड़ा करो, देखो। And when I sent him my chartered accountant, it was impressive net worth list. जब मैंने उनके पास नेटवर्क का सर्टिफिकेट के लिए डाटा भेजा, it was quite impressive. At the end of the day, what is my bank balance? Yeah, it's not only the bank balance. Yeah. So the net worth was quite impressive. At one point of time, there was not even, you know, I was dreaming कि मेरे तिजोरी में खाली 30,000 रुपए। कितना रहे? 30,000। 100 रुपये पर डे के हिसाब से साल में। Now I have much more. Leakage. Okay? And I really tell you, I don't allow now leakage to happen for long. यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर कर लिया है, हेलो मोहन जी क्या कर रहे हैं?
रिचार्ज कर देता Don't be leakage. Huh? So I am as alert as that. लीकेज क्लोज करो Sorry, I don't know, but don't leak me. अपना लीकेज क्लोज करो, मेरा मत लीकेज बढ़ाओ. You have to be alert like that. You have to be ruthless like that. Otherwise, you are doing injustice with the committed people. आप अपने committed people के साथ injustice करेंगे. और तब फिर out integrity होगा, which is out integrity. And I could see that, I was out integrity with my family members. मैं अपने बच्चों के मुंह से निवाला छीन करके लीकेज में डाल दिया. That was out integrity. I can't do that now. I have to be ruthless. And let me share, but Thakurji, when I was talking to Thakurji today, with, in front of him, बोले यार ये कैसे आप बात कर रहे थे? झगड़ा जैसे बात कर रहे थे. बस करना पड़ता है. लीकेज को रोकने के लिए झगड़ा करना पड़ता है. If you are in the fixed way of being nice, ऐसे उससे भी चला के देख लो. लेकिन जब तो भी लीकेज ना रुके, तो बस anything. सावधान दंड कुछ भी, but never utilize, never allow. पहला रूल इनकम बढ़ाने का और एसेट बढ़ाने का. Yes, Ranga sir. Any leakage that you are finding now, which you want to share? Clear 2 days. 2 days back. In the first 2 days, I said either it happens the way I say or back out. The only thing I would always say, what I have is time. I am abundance in time. Not for leakage. Huh? Not for leakage No people. leakage. Not for leakage people. Absolutely no. Yeah, that's good. Not for leakage people. Why? You have abundance of time because somebody else is paying for that time. What do you mean by somebody else? Somebody else. No. Okay. Whenever I say something, consider that and then ask what is somebody else. Instead of rejecting that. What is somebody else? Yeah, thanks for asking question. More you ask question, more breakthrough, more money. More you doubt, more loss. Profit and loss account. Universe gives you 24 hours. Everybody to fulfill your purpose. Whatever is your purpose. And if you come from, मेरे पास time है for fulfilling the purpose and not for Not wastage. Not No time to waste. No, not for leakage. Sometimes, most of the time, those people who are soft on you, nice with you, kind with you, you draw from here because yours is empty. So what do? You draw from here. And some people who are tight on you, who are demand on you, who boost your ego
sex, money as a barrier, not money, future money. Like I shared with you, 40,000 taking from somebody, giving to somebody for my future barriers, future expectation. So these barriers till the time they become empty. Once they become empty, if you are not stop, these are also leakage. Your barriers in forms of, one was the people outside of you. Now the outside, you remember the distinction of first semester. Outside is the reflection of your inside. That you can draw if somebody is massaging your ego or power. You tolerate that. Leakage, you tolerate. Similarly, for many people, it is sexual drive or the indulgence. May not be physically, maybe even mentally. Many people go to Landmark. Many people go to Vaishno Devi. Many of them, that's not physical, because physically nothing happens in Vaishno Devi, Tirth Yatra. Physically nothing happens in Landmark. But many people keep on going for 10 years, assisting. Leakage, huge leakage in Landmark. For 90% of the people. They are not aware. 90 plus. They are not aware. They think time ही जा रहा है ना, about the time. Time. कहते हैं लाइफ इज शॉर्ट. तो मैं ही हूँ. हाँ? सबसे ज्यादा लीकेज तो मेरे अपने में. मैं अलाउ कर रहा हूँ. That's what. Based on your barriers. किधर का barriers है? क्योंकि Landmark 50% is 30-40% are women. मेरे एक बहुत क्लोज रिलेटिव ने लैंडमार्क किया. 3 दिन हो गया. कैसा रहा? अरे बड़ा अच्छा रहा. बगल में करिश्मा, क्या नाम था? मनीषा कोइराला थी. सर 3 दिन आपको भेजा कितनी है? तो बड़ा मजा आया शेयरिंग करने में. मनीषा कोइराला और भी बड़ी अच्छी उतना दूर से मंगाया, फीस भरा, सब कुछ लीकेज. Ego we have discussed. Be careful. I have given many times the feedback to Ranga sir. Ranga sir, he is very, to a very large extent because of his practice. He is alert. Again, money. Many times expectation about that, fear about that can allow the leakage to happen. Like कभी जैसे I remember my finance head 15 दिन तक घूम रहे हैं एक आदमी के पास. क्या होगा जी? फ्लैट लेगा सर. मेरे बाद मालूम करके तो चेक. ठीक है, चेक मैं कब डालना है इसको? अगला दिन महीना पार. लीकेज. सर कैन यू डू वन थिंग? चेक ले जाके उसको लौटा दीजिए. लीकेज रोको. टाइम का जो लीकेज है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है ना, कल आ जाएगा. मेरा भी है, उसका भी है. इट इज ऑलवेज हियर. जाके बी अलर्ट, जाके लौटा के आ जा. थैंक्स बोलना जब आपके पास आ जाए पैसा बैंक में, उस दिन चेक लेके आ जाइए.
We have to be alert. I am alert. I am also always being nice to people. I am future lesson